हेलो गाइज, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देख के आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गेट रेडी विथ मी फॉर दिवाली वीडियो। आई यूजुअली डोंट डू दिस काइंड ऑफ वीडियो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। शुड आई कंटिन्यू मेकिंग गेट रेडी विथ मी काइंड ऑफ वीडियो और नॉट। एंड बिफोर मेकिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। आई डू बेसिक स्टफ जितना मुझे आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे ऊपर अच्छा लगता है, जस्ट डू दोज थिंग्स। तो कुछ भी वैसे हाई फाई नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक मेकअप। एंड आई गॉट दिस कुर्ती जो मैं आपको लास्ट में पूरा लुक दिखाने वाली हूँ, और एक्चुअली इसकी भी कहानी है। सो व्हेन आई केम टू यूके आई डिडंट ब्रिंग एनी ऑफ माई सलवार कमीज, आई ओनली हैड फ्यू साड़ीज। ये मैंने कैसे मंगवाई एंड एवरीथिंग, एंड ओवरऑल लुक आपको एंड तक वीडियो देखना है और आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो गाइज आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड माई स्किन। तो उसके लिए मैंने सेरम लगाया है विच इज़ लॉरियल रिवाइटलिस्ट हाइलोरोनिक एसिड, और उसके ऊपर आई हैव अप्लाइड मॉइस्चराइजर विच इज़ निविया सॉफ्ट. So after coming to UK, my skin has started drying up a lot, and Nivea definitely works on my skin. And now it's time for फाउंडेशन. सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट. सो मैंने बस एक ड्रॉप लिया है और उसी को मैं पूरे फेस में अप्लाई करने वाली हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर जो कि थोड़ा डैम्प है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम कंसीलर. तो मैं अपने अंडर आई में थोड़ा सा लगाऊंगी, वेरी वेरी लिटिल, थोड़ा सा अमाउंट, बिल्कुल नॉट अ लॉट, वेरी लिटिल प्रोडक्ट. सो नाउ इट्स टाइम फॉर आई मेकअप. और आई मेकअप के लिए मैं ये नायका का न्यूड पैलेट यूज कर रही हूँ. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस लाइटर शेड ऑफ ब्राउन एज अ बेस मेकअप फॉर माई आई शैडो. मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ. आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस एंड सम डार्क शेड ऑफ ब्राउन एंड देन अ ग्लिटर शेड. और मैं ये फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ. सो अगर आप नया नया आई मेकअप कर रहे हो और यू आर लुकिंग फॉर सम लाइक ब्रश कौन सा यूज़ करना है, तो गो फॉर दिस फ्लफी ब्रश. ये अच्छा काम करता है आई मेकअप के लिए. आई थिंक दिस विल गो रियली नाइस बिकॉज काफ़ी सटल सा आई मेकअप करना है. सो आई एम गोइंग विद दिस ब्राउन. अब बस एक ग्लिटर शेड लगाना है. उसके लिए आई विल बी गोइंग विद दिस ग्लिटर शेड. काफ़ी कॉपर कॉपर सा है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर गोल्डन, या फिर ये कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. सर आई विल बी जस्ट टेकिंग ऐसे फिंगर में और डायरेक्टली उसको लिड के ऊपर अप्लाई करूँगी. दिस इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ अप्लाइंग ग्लिटर शेड्स. लुक एट दिस शेड. आई थिंक इट्स रियली रियली प्रिटी. और फिर अच्छे से बस उसको एक बार ब्लेंड कर दूंगी. अब आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई काजल, और फिर मैं उसको अच्छे से स्मज कर लूँगी यूजिंग सम ब्राउन शेड. ओके, ओके, सो आई हैव डन इट. ये प्रॉपर्ली स्मज हो गया है. एंड फॉर द इनर कॉर्नर मैं फिर से एक ये स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, और उसमें मैं गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ पैलेट से, और उसको बस इनर कॉर्नर में आई एम गोइंग टू अप्लाई. काफ़ी अच्छा लगता है. यू कैन ट्राई इट. या so it's done. So guys, now it's time for bronzer. So I'm applying Wet n Wild का bronzer. You'll get this in Nykaa. और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश. फॉर दैट आई एम यूजिंग शुगर का ब्लश, एंड दिस इज द शेड पिंक पिनेकल. आपको लग रहा होगा पहले मैंने बोला नहीं नहीं यार, मैं तो बड़ा बेसिक सा बहुत ऐसा मेकअप करती हूँ, लेकिन आप सोचो कि ये तो लेयर कर ही जा रही है.
So now we are using highlighter और उसके लिए मैंने ये what do you call it, a wing brush? I'm not sure what is the name of this kind of brush. Fan brush. Sorry, it's not a wing brush, it's a fan brush, and I got this from Nykaa. So you'll easily get this if you just type highlighter brush, you'll get this kind of brush. So I'm going to apply Milani's crayon lip color and it is in the shade 110 No Curfew. बहुत ही अच्छा nude shade है for Indian skin tone. You can definitely go for it. और काफी long lasting है. That's what I like about it. Yeah, I think it looks good. Usually I don't give so much effort on my hair style करने में मैं ज़्यादा effort नहीं देती हूँ, but आज मैं देने वाली हूँ. Today I'm going to curl my hair. It's only for you, Maushmi. So मेरी friend जो है Maushmi, वो मुझे अक्सर कहती है either you straighten your hair or you curl your hair. At least do something with your hair because I don't give any effort on my hair. So today I'm going to curl it. So जल्दी से मैं आती हूँ curl करके, earrings डाल के, and then after that I'm going to show you my entire look. So guys, this is my final look for Diwali and I already mentioned you in the beginning कि इसके पीछे भी story है. So actually I ordered this kurti from Myntra, but Myntra only delivers in India. So my friend Zamaiyal was coming to UK and I asked them to bring it for me and thankfully they did. वरना इस दिवाली तो कुछ भी traditional नहीं होता मेरे पास. The USP of this kurta set is the beautiful embroidery work in the front and it comes along with the floral organza dupatta which has a golden lace around it. The quality of the kurta set is really good, the material is soft and the length of the dupatta is appropriate. So guys, I'm wearing size small and I paid around 1800 rupees for this, but in the recent sale I can see the price has dropped down to 1600. So do check out the link of the product which I'll be mentioning in the description section below if you're interested. So guys, I hope you enjoyed this video. Usually I don't make this chatty kind of videos or get ready with me. So do let me know in the comment section below whether you enjoyed it or not. Should I continue making this kind of videos or not? And thanks a lot for watching this and happy Diwali to everyone who is celebrating. Thank you again.